Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. This is our lecture number 6 in evolution course board 3632, that is the age of the earth. Actually, the planet Earth does not have a birth certificate to record its formation, which means scientists spend hundreds of years struggling to determine the age of the planet. That's how now we are able to say anything about the age of the earth by dating the rocks in earth's ever changing crust, as well as the rocks in earth's neighbors such as the moon and the visiting meteorites. Scientists have calculated the earth is the age of the earth is 4.5 billion years ago, with an error range of 50 billion years. Signed in northwestern Canada, they discovered rocks about 4.03 billion years ago. Then in Australia, scientists discovered minerals about 4.3 billion years ago. And researchers know that rocks are continuously recycling, and due to the rock cycle, so they continue to search for data elsewhere. Since it is thought the bodies in the solar system may have formed at similar times, and scientists analyzed moon rocks collected during the moon landing and ever meteorites that have crashed landed on Earth. Both of these material dated be between 4.4 and 4.5 billion years ago. That's how scientists estimated the age of the Earth is 4.5 billion years ago. Now we will discuss the early history of Earth, or the evolution of Earth. The history of Earth, or the evolution of Earth, concerns the development of the planet Earth from its formation to the present day. All the fields of branches contributed to understand the events of Earth's past, and characterized by the constant geographical changes and the biological evolution both. As we have discussed, the Earth, the age of the Earth is about 4.5 billion years, and at that time the Earth was actually covered with the molten lava. What is meant by the molten lava? Actually, molten lava is the lava called magma when it is present in the earth, and it emerges outside of the earth in a liquid form. So the term lava is also used for the solidified rock formed by the cooling of a molten lava flow, and the temperature of molten lava ranges from about 700 to 1200 centigrade. So molten लावा उस वक्त तक लावा सॉलिडिफाइड स्टेट में रहता है जब तक कि ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और लावा ज़मीन के से बाहर इमर्ज होना शुरू होता है, तो फिर हम उसे कहते हैं molten lava. Actually, Earth was at that time completely unrecognizable, and the earliest stage of life, earliest stage of the in the formation of life, Earth, it was uninhabitable. Uninhabitable means the Earth is not suitable for the to support the existence of life, or it is unfit to support the
existence of life, right? तो uninhabitable क्या मतलब है? Uninhabitable means the place unsuitable for living here, or it is unfit for habitation of living organism. So at very early time of Earth's formation, Earth is not suitable place for the living organism. So Earth at that time clumped from a cloud or dust, and since about 1 billion years ago, Earth had its first signs of life. So after 1 billion years, Earth was Earth came in the condition for the survival of life. के 1 billion years तक यहाँ पर suitable सारे resources नहीं थे कि वो support करता कि यहाँ पर कोई भी living organism survive कर सके. So after 1 billion years ago, and it is about 3.4 or 5 billion years, then life emerged on Earth. Single-celled organism evolved at first, like archaebacteria. At initial stage, archaea was considered as bacteria, as we have discussed in last lectures. Single-celled organism actually consume the sun's energy as a waste product, and the cyanobacteria eventually filled the ocean and atmosphere with oxygen. So after 1 billion years ago, Earth came into the condition where life emerged. So cyanobacteria or the other prokaryotic autotrophs, when they manufacture their own food material by the process of photosynthesis, they produce oxygen as a byproduct. So this oxygen are present in atmosphere as well. So this oxygenated atmosphere paved the way for more complex life forms existed about a million years ago. Single-celled organism, then other complicated form of life come into existence. So finally, after a billion years ago was the age of the mammals, and these mammals are our direct ancestors, and it was only million years ago when Homo sapiens truly evolved. In this Earth timeline, we lay out all the pieces of the floor. The first era, which is started from 4.6 to 4 billion years ago, in which the Big Bang created all matter in the universe. This includes the sun, the planets, and our solar system. At the center, the sun swept in smaller elements like hydrogen and helium. As we have discussed, the hydrogen and helium as a lighter element that forms the solar system. At the center, the sun swept in smaller elements like hydrogen and helium. Further away, heavier elements formed planets. Lighter elements form the solar system, and the heavier elements form the planets in the universe. Based on the core acceleration model, gravity was the driver
Earth from a cloud of dust. In the early stage of Earth's creation, the heaviest मटेरियल लाइक आयरन सैंक टू द कोर. अभी आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो अर्थ के अंदर अर्थ रिवॉल्व कर रही थी एज ए मार्स लाइक smaller structure around the sun, but when the temperature decreases and water इसके अंदर फॉर्म हुआ, तो जब टेम्परेचर ग्रेजुअली जो है वो कम होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो जो हेवीएस्ट एलिमेंट्स थे लाइक आयरन, तो वो आयरन एक्चुअली सेंक टू द कोर ऑफ द, और कोर मीन्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो सेंटर था वहाँ पर जो है आयरन एज ए हैवी ग्रेविटी की वजह से जो है वो नीचे की तरफ नीचे की डायरेक्शन में चला गया, और जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर मटेरियल्स रिमेन्ड ऑन द टॉप ऑफ टू फॉर्म अ क्रस्ट, और लाइटर मटेरियल ने क्या किया, दैट फॉर्म्स द क्रस्ट. इस तरह से जो है अर्थ के लेयर्स फॉर्म हो गए फ्रॉम कोर, mantle and crust. So the solid inner core heats the outer layer, liquid layer, and it produces convection current. Earth would be blasted by harmful rays from the sun, and in the later year of this era, the Earth was still in its late heavy bombardment stage, and Earth was hit by asteroids. Asteroid ने hit किया, और and that forms a foreign object left, right, and center, and we know it wasn't only Earth because we can see this impact on our places in our solar system. Some scientists believe that water originated from the bombardment of the comets at that time. In addition, there is reason to believe that this collision could have sparked the chemical structure building block of life. DNA was created. One of the most important events for Earth was the formation of our moon. At that time, the giant impacts hypothesis described it as object the size of the Mars heading towards Earth at tremendous speed. After delivering a glancing blow of Earth, gravity pulls this object into orbit, and ever since this grand event in this era is remained in orbit since ever. तो इस तरह से जो स्कल्पचरिंग अर्थ की है वो 4.6 ईयर में जब अर्थ फॉर्म हो रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ, सबसे पहले जो है इसके अंदर क्या हुआ कि सबसे पहले एस्ट्रॉइड ने आकर हिट किया किसको, अर्थ को, तो वाटर फॉर्म हुआ. लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि हैवी मटेरियल जो है वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के कोर की तरफ चलेगा, और जो लाइटर एलिमेंट्स है वो ऊपर की अपर सरफेस पर रह गए, जिससे कोर और जो है क्रस्ट फॉर्म हुआ. इस तरह से डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ जो है वो क्रिएट हो गई. फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है एस्ट्रॉइड्स ने बम्बार्डमेंट किया तो वाटर जो है वो अर्थ पर फॉर्म होना शुरू हो गया. यूं जो है टेम्परेचर बहुत ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, और मून फॉर्मेशन भी तभी हुई, और ये सारे कोर एक्सीलरेशन हुआ जिसमें आयरन जो है वो नीचे चला गया था, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और फिर बम्बार्डमेंट स्टेज, बम्बार्डमेंट की वजह से ही जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म होने शुरू हुए, जिसके अंदर आपको बताया भी कि बम्बार्डमेंट की वजह से ही जो है वो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लाइक डीएनए भी फॉर्म होना शुरू हुआ. तो इस तरह से यूं जो है वो अर्थ का स्कल्पचर जो है वो फॉर्म हुआ इनटू डिफरेंट लेयर्स.
Now we will discuss the events between 4 to 2.5 billion years ago after the creation of Earth, when Earth's climate temperature gradually settled down or cooling down. The collision of the Earth into Earth significantly impacted climate, oceans of the and life on Earth, because the Moon's orbit drags Earth and it slowed Earth's rotation significantly from 6 hours days to the 24 hours. हुआ क्या था कि पहले ये रोटेशन बहुत फास्ट थी और इतनी फास्ट कि 15 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता था एक सर्कल, एक रोटेशन अर्थ का। आहिस्ते आहिस्ते रोटेशन जो है वो स्लो हुई और तकरीबन जो है ये 24 आवर्स का अब पूरा 1 डे होता है। By having the moon in orbit, it also stabilizes the earth from wobbling. But most importantly, the collision of the moon tilted earth on its axis. Eventually, the climate on the earth became more stable and instead of a molten state. ठीक है, अब जब मोल्टन स्टेट हुआ, ओशन पानी फॉर्म हो गया, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो फिर जो है वो डीएनए भी फॉर्म होना शुरू हो गया और इट as the earth cooled down, a new form of life began to prosper, and when oxygen was absent in the atmosphere, cyanobacteria could convert sunlight to energy. So cyanobacteria were prokaryotic individual. So the cyanobacteria could convert the sunlight to energy, chemical energy. In shallow water, they metabolizes their own food, and as a waste product, cyanobacteria released oxygen into the ocean. So when oxygen mixed with the iron in the ocean, rusted iron collected on the sea floor, right? So the banded iron formation continued until there was no more iron in the ocean to rust. Oxygen had nowhere to go but into the atmosphere, and that's why this event is the great oxygenation event, right? तो अब ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो चुका है एटमॉस्फेयर में इन द ड्यूरिंग दिस एरा, और जब ऑक्सीजन फॉर्म हो चुका है तो फिर आगे जो है वो लाइफ को सपोर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ को भी सपोर्ट करेगा। After 2 billion years ago, now the earth had oxygenated atmosphere for new life forms to flourish on the earth. But it wasn't cyanobacteria flourishing, because oxygen was toxic for the cyanobacteria and they poisoned all anaerobic life on earth, including themselves. At that time, methane was more abundant in the atmosphere because the methane has ability to absorb heat from the atmosphere. So methane was present in the atmosphere in very large amount. When oxygen reacts with methane, they form the carbon dioxide that creates a greenhouse gases. So when oxygen combined with methane, it produces carbon dioxide and the greenhouse effect. But this greenhouse effect wasn't so strong, so the whole planet froze and the snowball earth formed for about 300 years. Another important consequence of an oxygen-filled atmosphere was the emergence of eukaryotic organisms, aerobic eukaryotes. Before the oxygenation of life,
was before oxygenation of life was anaerobic, like cyanobacteria, but eventually aerobic respiratory organism emerged because of the enriched atmosphere. The increased the complexity of life and the multicellular organism become apparent in this era. But the abundance of carbon dioxide held eukaryotes from the diversifying. As oxygen filled the atmosphere, Earth's ozone layer thickened, and before the presence of an ozone layer, life was restricted to the shallow water because water shielded harmful radiation. That's where life existed. Eventually, a thick ozone layer enabled life to diversify on land in the Proterozoic era, right? तो क्या हुआ कि 2 बिलियन ईयर्स के बाद ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गई, लेकिन जो है इस ऑक्सीजन से पहले जो एनारोबिक साइनोबैक्टीरिया थे जिनके लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत पॉइजन था, टॉक्सिक था। फिर उसके बाद अर्थ को फेस करना पड़ा एक ऑक्सीजन क्राइसिस, और उसके बाद जो है उस ऑक्सीजन क्राइसिस से निकलने के बाद जो है यूकैरियोट्स फॉर्म होने शुरू हो गए, एरोबिक यूकैरियोट्स भी फॉर्म होने शुरू हो गए। लेकिन जब मीथेन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो जो है वो उसने पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट फॉर्म किया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सका, जिसकी वजह से नेक्स्ट 300 ईयर्स जो है वो अर्थ जो है वो फ्रोज हो गई, और जो है वो आइस एज कहलाता है। उसके बाद जैसे ही इस 300 बिलियन ईयर्स के बाद वो तमाम एटमॉस्फेयर जब इनरिच हो गया और वो तमाम एलिमेंट्स भी आ गए, तो फिर जो है मल्टीसेलुलर लाइफ की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई, और मल्टीसेलुलर लाइफ की एग्जिस्टेंस मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ की तरफ डेवलप हुई जब ओजोन स्टेबलाइजेशन हुआ, क्योंकि स्टोन ओजोन लेयर उस वक्त स्टेबलाइज हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो चुकी थी, और ये ओजोन लेयर जो है अब ऑक्सीजन जो कि ये ऑक्सीजन फॉर्म हो गया था, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि एटमॉस्फेयर को फिल कर दिया, जिसकी वजह से ओजोन लेयर थिक हो गई, और थिक होने की वजह से जो है इसने लाइफ का एरिया बढ़ा दिया, लाइफ की एग्जिस्टेंस का या क्रिएशन का एरिया बढ़ा दिया। अब लाइफ जो है ओशन से निकलकर अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर भी आ गई, और इस तरह से जो है वो लाइफ जो है वो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी सिर्फ वाटर तक पहले, क्योंकि वो वाटर में ही थी, क्योंकि वाटर में वाटर शील्ड उसको जो है प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम एनी हार्मफुल रेडिएशन। अब चूंकि यहाँ पे ओजोन लेयर भी मौजूद थी लैंड पर, तो जो है वो ओजोन लेयर भी हार्मफुल रेडिएशन से अब ऑर्गेनिज्म को सेफ रख सकती थी, जिसकी वजह से जो है अब ओजोन लैंड पर भी जो है वाटर से लैंड तक जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, और ये एरा है जो है कहलाता है पेट्रोजोइक एरा। 541 to 245 million years ago, the period was called the Cambrian. The period was of the Cambrian explosion and the fossil record period. इसमें क्या हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और फॉसिल रिकॉर्ड हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन actually are the events which occurs in the between the 541 million years ago। ये वो पीरियड है जिसमें practically almost all 70% of vertebrates are formed and about 90% of marine species were formed। और इस पीरियड से पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पर हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। इस पीरियड के बाद चूँकि वर्टिब्रेट्स फॉर्म हो गए थे तो फिर जो है ग्रेजुअली जो है हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स भी
मिल रहा होता है। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जब हुआ तो फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में जो पहले जो इवेंट्स होते चले गए हैं उसमें इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए। इन्वर्टिब्रेट्स के फॉर्म होते ही क्योंकि ओशन के अंदर लाइफ फॉर्म थी, एम्फीबियंस प्रोड्यूस हो चुके थे, तो साथ में जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इनमें इवॉल्व होना शुरू हुए जो कि इन्वर्टिब्रेट्स थे। तो अब इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, उसके बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते वर्टिब्रेट्स भी फॉर्म होना शुरू हो गए और फिर फिशेस इवॉल्व हुई। फिशेस ने जो है फिशेस जब इवॉल्व हुई, सेवरल टाइप्स ऑफ फिशेस और सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेस वर इवॉल्विंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फिर वो फिशेस जो थी आहिस्ते आहिस्ते इनकी कुछ स्पीशीज इवॉल्व होती गई और ग्रेजुअली जो है वो दूसरी उनसे स्पीशीज जो है उनके अंदर चेंजेस आती चली गई और वो जो है एम्फीबियंस के तौर पर भी अब मौजूद है। साथ ही लैंड के ऊपर फंजाई डेवलप हो गए थे और फंजाई ने फिर सपोर्ट किया था वो तमाम, क्योंकि फंजाई डिकम्पोजर्स भी हैं, तो इन्होंने वो तमाम एलिमेंट्स अब फॉर्म कर दिए थे जो कि लैंड प्लांट्स की इनहिबिशन के लिए ज़रूरी हैं। सो इस तरह से एम्फीबियंस भी फॉर्म हो गए, ठीक है। लैंड प्लांट्स के साथ एम्फीबियंस कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि एम्फीबियंस होते हैं, लाइक टेरिडोफाइट्स फॉर्म हुआ ब्रायोफाइट्स के बाद। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स फॉर्म होना शुरू हुए, फिर उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो दूसरी कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस हुए। फॉरेस्ट भी यहाँ पर डेवलप होने शुरू हुआ और फिर जो है इंसेक्ट्स उन्हीं फॉरेस्ट के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाइज और जो है वो इंसेक्ट्स डेवलप होने शुरू हुए और फिर जो है वो कोल डिपॉजिट और एक्सटिंक्शन हो गई। तो ये पूरा एरिया जो है वो पूरा एरा जो है ये फॉसिल रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर। When Earth's climate became hotter and drier, rainforests collapsed and the age of the reptiles started. Reptiles are different from the amphibians because they lay their hard-shelled eggs on land. They specially adapted to the land by cutting all ties with the oceans. Reptiles evolved to dry land conditions. They gained a unique ecological advantages. As conditions changed, dinosaurs began to evolve. This reptile, like mammals, had scaly skin, right? जैसे ही कॉनिफोरस जो हैं वो फॉरेस्ट डेवलप हुए तो फिर जो है वो डायनासोर्स फॉर्म होने शुरू हो गए. This dinosaurs actually adapted as herbivorous and some as carnivorous. Herbivorous, they depend on forest, and as a carnivorous they depend on other animals. For the next 160 million years, the dinosaurs were the dominant land vertebrates on the earth. The age of the coniferous in the Mesozoic era provided the spread of the seeded plants, right? So इसमें that supports the that are the seed that produces the seeded plants, and conifers store vast amount of carbon. As a result, oxygen content in the atmosphere jumped to the 35% compared to the 21% today. In addition, they provided habitat, shelter, and a source of food for the specific animal species to survive, for example, birds and the mammals. All notable is that in this era, dinosaurs lived on one supercontinent plate. Tectonic were the mechanism that eventually tore the continent apart. Right? तो इस तरह से जो है we can find out the fossil of on separate continent
of from this era. तो इस एरा के अंदर रेप्टाइल्स फॉर्म हुए, फिर कॉनिफर्स फॉर्म हुए जो कि सीड प्लांट्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया, और वहाँ से जो फ्लावरिंग प्लांट्स को भी सपोर्ट मिली और वो भी मैमल्स भी यहाँ पर ग्रो हो गए बिफोर द 245 to 66 million years ago. Ultimately, the start of the Cenozoic era was the demise of dinosaurs. After 6-mile wide asteroids hit Earth, after 6-mile wide asteroids when hit the Earth, a dust cloud blocked the sun, and this caused temperature to plummet, which was the heart of the damage from the Cretaceous extinction, or because the worldwide climate disruptions, and it was responsible for the extinction of dinosaurs as well. Mammals existed long before the Cenozoic era, but they kept low profile because dinosaurs dominated the land, and after the extinction of the dinosaur, the age of the mammals started. Apes, grass, apes, and then gradually Homo sapiens as a modern life form of has been evolved before 66 million years ago to now. Thus, different cities, Stone Age, Homo sapiens में आपको पता है Stone Age, फिर gradually जो modern life forms start हुई, cities बनना शुरू हुई, इस तरह से ये different age of life जो है उसको बयान किया जाता है. Geologic time period. Geologic time period आपने सबसे पहले देखा कि अर्थ किस तरह से क्रिएट हुई, किस तरह से अर्थ का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, किस तरह से अर्थ की लेयर डेवलप हुई कि हेवीएस्ट पार्टिकल कोर की तरफ चली गई और लाइटर जो है वो क्रस्ट फॉर्म किया उसने, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट था फ्रॉम एज कम्पेयर टू द कोर, इसीलिए हमेशा लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ज़्यादातर कहाँ पर, क्रस्ट पर. या फिर और फिर जो है ग्रेजुअली इनसाइड जो है वो वो जो है अर्थ के कोर के साइड पर टेम्परेचर ज़्यादा. अब जब स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, अर्थ फॉर्म हो गया, अर्थ क्रिएट हो गया, तो अर्थ किस तरह से वहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करता गया, ये डिफरेंट एरा के अंदर आपने भी पढ़ा, फ्रॉम हिडन एरा टू द सीनोजोइक. तो इस तरह के 6 एरा आपने स्टडी किया. इस पिक्चर के अंदर यही एरा आपको इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एरा कितना प्रोलॉन्ग था. या प्रोटोजोइक एरा आपको नज़र आ रहा है कि बहुत प्रोलॉन्ग एरा था, और सबसे शॉर्ट एरा जो है वो सीनोजोइक एरा यहाँ पर शो हो रहा है. तो अब यहाँ पर हम आज का लेक्चर अपना इनफ करते हैं. ये लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंसिडर कीजिएगा. लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 मैं आपको कुछ देर के बाद अगेन सेंड करूँगी. इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर. आई विल रिप्लाई. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़.